Hello, my YouTube family. Today we are going to do some magic, and in that, the topic that I've selected is magic squares. With with the help of this magic square, you can total the rows and columns, and it is going to come same. So let's begin. So what is your take home? आप इस वीडियो से क्या सीखेंगे और क्या आगे कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल यू विल लर्न हाउ टू गेट द टोटल ऑफ रो एंड कॉलम टू बी द सेम. से फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं ऐसा 3 ग्रिड दिया जाता है, ऐसे तीन, एक ऐसे यहाँ पे कुछ नंबर दिया है, यहाँ पे कुछ नंबर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, हर जगह पे क्वेश्चन मार्क दिया. तो इन सब का टोटल सब यहाँ पे सेम आना चाहिए. तो ये कैसे आएगा वो आज सीखेंगे. एक बार ये टेक्निक आपने सीख लिया, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा इट्स जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले. तो आइए चलते हैं. सपोज आपको ये ग्रिड दिया गया है, राइट. ये ग्रिड आपको दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, राइट. तो अगर आपने 9 + 5 + 1, तो इसका टोटल क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी 15. इसका टोटल क्या हो गया? 2 + 7 + 6, इट इज गोइंग टू बी 15. अभी ये तो इजी पड़ गया. तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? तो आपको यहाँ पे 15 लाना चाहिए. दैट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू बिकॉज 8 + 4 is 12, 13, 14, 15. तो नंबर 3. सो यू विल गेट टोटल हियर 15. ये तो इजी है. पर अगर आपको ऐसा दिया गया कि हर जगह पे क्वेश्चन मार्क, देन यू आर गोइंग टू स्क्रैच योर हेड, राइट. इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट. आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा. एंड देन फिर अगर नहीं आया तो आप छोड़ भी सकते हैं. तो से फॉर एग्जाम्पल ये जो था वो 3 ग्रिड था, यहाँ पे 5 ग्रिड्स है. ऐसा ऐसा नंबर्स दिया है, 5 ग्रिड दिया है. 5 ग्रिड देने के बाद अगर आपको ऐसा पूछा गया तो देन ऑल्सो यू गोइंग टू स्क्रैच योर हेड. बट जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने ये टेक्निक सीख लिया, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. इट्स गोइंग टू बी लाइक अ चाइल्ड्स प्ले. तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने हैं. तीन चार, मतलब याद इन द सेंस 3-4 बार इसको पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा. और पढ़ने के बाद इसको हम प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. राइट वन हाफ वे टू द लास्ट कॉलम. सपोज आपका कॉलम है 1 2 3. हम 3 का ले लेते हैं यहाँ पे, तो इट इज गोइंग टू बी इजी. राइट वन हाफ वे टू द लास्ट कॉलम. 1 2 3. हाफ वे कहाँ पे होगा? यहाँ पे. ओके. सो 1 यहाँ पे हम लिखेंगे. आफ्टर राइटिंग अ नंबर इन द स्क्वायर, मूव टू द स्क्वायर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड फिल इट विद द नेक्स्ट नंबर. अब साउथ ईस्ट अगर किसी को पता नहीं है तो हम वो भी सीख लेंगे. नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट वो कहाँ है वो भी हम सीख लेंगे. ठीक है. सो जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड इट. The third rule is, if the square in the southeast direction cannot be filled, then move to the square in the west and write the next number. थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि ये कंफ्यूजिंग है, पर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी. When you have filled a number in the last square of the grid, fill the next number in the square to the west. लास्ट नंबर मतलब अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर फिल कर दिया तो उसके बाद आप फिल करने के बाद जगह है नहीं, यहाँ पे जगह है नहीं, तो ये नंबर के वेस्ट साइड में आप नंबर फिल करेंगे. दैट इज व्हाट रूल नंबर 4 इज सेइंग. इसको आप 3-4 बार पढ़ लीजिए. 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको सब समझ में आ जाएगा जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो. ठीक है. तो नॉर्थ ईस्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट. अब साउथ ईस्ट कौन सा होगा? सो दिस इज गोइंग टू बी साउथ ईस्ट. वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस, जो ये साउथ ईस्ट है, ऐसो. ठीक है. सो इतना याद रखिए कि साउथ ईस्ट कौन सा होगा. जो भी स्क्वायर है उसके, दिस इज गोइंग टू बी दी साउथ ईस्ट. ठीक है. सो लेट अस मूव अगेन. आप लोगों ने देख लिया नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट देख लिया और साउथ ईस्ट भी देख लिया. ओके. दिस इज इतना याद रखना. तो ये ग्रिड मैंने यहाँ पे रखा है 5 by 5 का.
So let us take the first rule. First rule क्या बोलता है कि place the first number in the center square of the last column. Last column कौन सा है? ये. This is our last column. Center 1 2 3 4 5. तो इसका सेंटर में क्या आएगा? 1. तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ. ठीक है, तो मैंने वहां पे 1 लिख लिया. दूसरा रूल क्या है? रूल नंबर 2, मूव टू द स्क्वायर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 1 तो लिखा है, इसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं है, नहीं है. अब क्या करेंगे? देयर इज नथिंग. सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे एक स्क्वायर है. हम इमेजिन करेंगे यहाँ पे एक स्क्वायर है, और वहां पे पर हम कुछ लिख तो नहीं सकते, उसका डायरेक्शन तो ये है. क्योंकि हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते, तो हम इसके यहाँ पे इस तरह लिखेंगे. दैट इज नंबर 2. नेक्स्ट नंबर 2. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ स्क्वायर नहीं है, तो हम मूव हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिख लेंगे. From 2, from where we have written 2, we will take the southeast. Where is the southeast of 2? Southeast of 2 is this, right? This is southeast of 2. So here what will we write? Number 3. ठीक है. Now next from 3 southeast there is no square available. Hence, like before, like here we had an imaginary square. Like here we had an imaginary square. We will take the imaginary square to the southeast of 3. Okay, but you cannot write the next number here. So what will we do? Though like 2 we wrote here, we will take this number this side. We will take this number here and we will write number 4. Okay, now next to the number southeast, you have southeast here, so you will write number 5 here. Okay, you can see that the southeast of 5 is filled by 1. ठीक है, साउथ ईस्ट ऑफ 5 इज फिल्ड बाय 1. यहाँ पे तो हम कुछ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आएगा रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ द स्क्वायर इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन कैन नॉट बी फिल्ड, हम फिल नहीं कर सकते बिकॉज 1 इज ऑलरेडी फिल्ड, देन मूव टू द स्क्वायर इन द वेस्ट ऑफ द नंबर and write it with the next number. So what will we do? So we write 6 to the west of 5. ठीक है, 5 के बाजू में west of 5 is this, so you will write number 6 here. Okay, now southeast of 6 is, you have southeast, you can write here 7. You have southeast of 7, that is here, that is also empty, right? Now you have southeast of 8, that is imaginary square where you cannot write anything. So where will you write? You will write it here. So here you will write number 9. इधर तक आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं मानती हूँ. आपने देखा कि साउथ ईस्ट ऑफ 9 इज ऑल्सो इमेजिनरी स्क्वेयर. तो इमेजिनरी साउथ ईस्ट हियर, तो वी विल टेक नंबर 10 एंड वी विल राइट नंबर 10 हियर. ठीक है, नंबर 10. अगेन square is already filled. Southeast of 6, southeast of 10 is filled with 6. तो हम क्या करेंगे? 10 के बाजू में you will have 11. Okay, like the 5 के वेस्ट में हमने 6 लिखा, 10 के वेस्ट में हमने 11 लिख दिया. Now southeast of 11 is empty, so you will write 12. Then southeast of 12 is empty, you will write 13, and southeast of 13 is empty, that is 14. Southeast of 14 is 15. Okay, now this is the last cell, right? This is the last cell, and this is where rule number 4 is going to be applied. What is rule number 4? When you have written a number in the last square of the grid, this is the last square of the grid, write the next number in the west of that number. West of that number will be
this. So west of that number 15 ke baad what is after 15? After 15 is 16. Now imaginary square, you cannot write anything here, so where will 17 come? 17 will come here, so we write 17. Again southeast, there is nothing, again imaginary square, where will you write? Here, then you will write it here. 18 will come here. Okay, so 18, again the southeast of 18 is empty, so you will write 19. Southeast of 19 is empty, so you will write 20. Now southeast of 20 is filled, rule number 4. So where will 21 come? Southeast in the west of this, so 21 will come here. Southeast of 21 is empty, so you will write 22. Now again imaginary square for 23, so that imaginary square will come here, 23. Southeast of 23 is empty, so you will write 24. Southeast of 24 is nothing is there, imaginary square, that will come here, so you will write 25 here. So you have all the squares filled. Now if you want to check these total, if you want to check 11 plus 10 plus 4 plus 23 plus 17, the answer will be 65. If you're sincere about this magic, then take a blank page and draw a 5 by 5 grid and practice. I can give this grid in the description section. You can get it printed, or you can just draw and get it. If you want, I can give you some hints for practice, hints or tips that I can give you. The grid that you're going to take is going to be always odd. Either it is going to be 3 by 3, 5 by 5, 7 by 7, 9 by 9, all odd numbers. Now this is the first hint that I gave, or first tip that I gave. The grid that you're going to take is going to be in odd numbers. The first and the last number is always same in the same row, and they are opposite. The first, if you remember, we had put the number 1 here, we had put number 1 here, right? And 25 will come here. Number 1 and 25, they will come here. If you want, we can go back and see whether it is correct, right? Number 1 is here and 25 is here, right? It's going to be in the same row, 1 and 25. That is the second tip. The first is odd number, second, it is going to be in the same row. Now the total of any row or column can be found out by multiplying the centermost number with number of squares. Say for example, our number of square is 25 and the center number. For this we will go back, center number is 13, multiply by 13, that is equal to 65. So the total of rows and the total of column is going to be 65. But how do we get to know that 13 is the centermost number? You can find out which number will be in the centermost number. This is my fourth tip that I'm going to, that you can find out what is the centermost number by taking the highest number and round off. Suppose, say for example, in a 3 by 3 grid, what is the highest number? 9, right? So what you do is take the highest number, that is number 9, divided by 2, so you will get 4.5. You round off, so that will be 5. So what will be the centermost number in the 3 by 3 grid? This one, 5. Now let us take 5 by 5. What is the highest number? 25. What you have to do? Divide by 2. When you divide by 2, it is going to be 12.5. What will you do? Round off,
13, and you saw that 13 is the centermost number. So this is the fourth hint that I have given. So with the help of point number 3 and 4, we can know the total of any row and column. Now since you know the magic, you can practice with others, and I'm sure you will love it, and you will share it, and you will enjoy it. So thank you very much for being with me. Don't just keep it with you, share it with others, and in the comment section please give your valuable comment, so that I'll get motivated to prepare these kind of videos more and more. Thank you once again.